So welcome Deepak on Defense Talk. Thank you. Very congratulations to you to become a part of this prestigious force, सशस्त्र सीमा बल. और yesterday we talked with Vinit. बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा था. आज भी हम आपसे बात करेंगे और आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानेंगे. सीओपीएफ में आप कैसे आए, इससे पहले आपके सिविल्स के भी काफी अटेम्प्ट रहे हैं. सो हाउ बेसिकली आप सिविल इसमें सशस्त्र सीमा बल का एक पार्ट बन जाते हैं, ये सभी चीजें आपसे जानेंगे. ठीक है, तो Okay. आपसे मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि आप अपने बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, अगर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकें, और कुछ हॉबी और इंटरेस्ट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है. Okay. So first of all, thank you, Aman, for having me here for this interview. And I would like to start off by telling more about myself. My name is Deepak Sapkale, and I hail from Jalgaon district of Maharashtra. And I've completed my BE in mechanical in the year 2016 from Pune University. And after that, I sat for the campus placement, and I started working in Cognizant Technology Solutions, where I worked as a programmer analyst for more than a year. And after that, I decided that this was not my cup of tea. And since I was a mechanical graduate working in the IT field, it was not suiting my profile. So I looked up for options, and I found that this government service would be a good choice for me, and the kind of respect it entails here at home in my family. So I thought I should go with it. And at the same time, I also wanted, I had a liking for uniform services. So UPSC was one exam which could introduce me to this entire gamut of fields which were there in government service. So I started preparing for UPSC in 2018. So I gave my first attempt in 2018, after which I couldn't clear the pre. Then after that, in 2019, I gave my second attempt, and in the same year, I also gave UPSC CAPF in 2019. Right. So this, I would say, was the starting point of my journey into where I am currently. So that in 2019, I gave CSE and CAPF. And again, in 2019, I couldn't clear the pre of civil services examination. Okay. And in 2000, but I cleared the first stage of CAPF. So that was a good start for me. And at the same time, when this is for all the aspirants out there, we have kind of an uncertainty of what could happen. The entire UPSC journey is so uncertain. You don't know whether you'll pass. So as a plan B, I kept an easier exam in focus, which was banking exams. I also started preparing for banking. Okay. So the reason why I started targeting banking exams as well is because in UPSC as well as civil services as well as CAPF, in the first stage there is the second paper. Right. It has all the aspects which are there in banking exams. Right. It has reasoning, English, aptitude. So I thought if I prepare for banking exams, I wouldn't be going out of the way. The only thing that I had to study differently was general knowledge, which would again be covered under my current affair preparation in the UPSC journey. So similarly, in 2019, I gave 3 exams, which is SBI clerk, then CAPF, and civil service exam. Civil services, I didn't clear the P. SBI clerk, I cleared all the stages. There are 2 stages in that. And in December 2019, I got my first job offer. I got the offer letter, which was SBI clerk. So I decided not to take it up because once you start off preparing for UPSC civil services, everything else is below that line. Right. So I decided not to go with that. But I thought if I'm doing good in the banking exams, why not go a bit ahead? So why not try for the managerial post? Right. So again, next year I decided I'll go for the PO exams, probationary officers. Then in 2020, I gave my IBPS PO, which I cleared again, and I got Bank of Maharashtra. This is June 2019. So this is the second job offer that I got. And since it was the COVID year and there's so much uncertainty, people are afraid to go out, I decided not to join that one. And the CAPF exam, CAPF that I had given in 2019, its exam results were on hold. So right now I had only this one job offer, which I decided not to take. Then in the same year, I also gave other exams such as NABARD and SSC CGL. So basically, I desperately wanted a job now. And what a good respectable job which I could keep. So I started giving higher, the managerial level exams of all the banking sector exams. So I gave NABARD Development Assistant, which I cleared. Then SSC CGL, I cleared. But then again, once you start clearing this exam, you think okay, just one more attempt of CSE or CAPF, and maybe I can go there. So I had a good backup built now. So I got clerk for SBI clerk, then IBPS PO, NABARD Development Assistant, and the fourth exam that I cleared was SSC CGL. There were 2018 SSC CGL. In November 2020, the results had already come out. So
I was writing I was giving the interview for UPSC CAPF as well as NABARD Grade A. So these two interview were like they were in my hand, and at the same time I was preparing for other exams as well, such as CSE preparation was continuously going on. So I decided to go for the interview, and NABARD Grade A as well as CAPF. I gave the interview wholeheartedly. I like, put in all my efforts, and fortunately, in February 2021, I got to know that I've cleared both the results, and the results came at the same time. Right. So now I had an option of NABARD Grade A, which is a banking job, or UPSC CAPF 2019, the interview. But we were not sure what force, like we were not allotted the force yet. This is February 2021. Right. So, but I cleared CAPF. So I was sure that I'm going for the uniform services because it was, like, it's everyone's passion to have a uniformed job, and that too in class 1, class A. So my leaning was more towards UPSC CAPF, and NABARD wanted me to join within a month. So I did not accept that offer letter and decided to wait for CAPF, the joining. And at the same time, there was this one notification came out around March, RBI Grade B in 2021. So I decided, okay, let's try this one. This is a very lucrative job. Everyone wants to go here. All my friends wanted, I had made a lot of friends in the banking sector. So for them, this is UPSC. The RBI Grade B exam is UPSC for all the bankers that had. Mini UPSC. Yeah. So in June 2021, I gave RBI Grade B. And again, the results of that came out in October. Okay. And I got to know that I'm selected. And then October, again, we got the offer letter for the UPSC CAPF, that our joining will be in December. And so now I had the result of RBI and the joining letter of UPSC. And along with this, I had also given ECGC PO exam. So that result came in November. But since my joining was already, like, I decided to join, then I joined in December 1st. On December 1st, I joined SSB, and I'm here. So if I give you a list of exams that I cleared before I took up this job as SBI clerk in 2019, 2020 I got IBPS PO, 2020 again NABARD Development Assistant, SSC CGL, then in 2021 NABARD Grade A and UPSC CAPF 2019, and then October May RBI Grade B, and in November ECGC PO with an AR 10 in that exam. So ECGC PO is very, like, it comes out in twice, like in 2 years they conduct exam once, or 3 years. So there are very less vacancies. I got an AR 10 in that. So despite all these 6-7 job offer letters that I had, I decided to go for this because I think I saw myself, I saw my future here in the forces, armed forces, and in the uniform. So I joined, and now I've completed 1 year of training. Finally, I'm an assistant commandant, and it feels good that all this hard work, all the 3-4 years of preparation, it finally worked out. And throughout this journey, my family has been very supportive. Yeah, please. Yeah. Now we are waiting when you will be clearing this civil service exam, and the day you will do your interview. Na? It's a bunch of list you have cleared. Yeah, it's a never-ending journey. आपने यहाँ पे you have mentioned 2018 से you have prepared this exam you have cleared. उसके बाद भी you didn't join. Offer letter you got, you declined the offer letter. मतलब how? Yeah. What was the strength behind that? आपको मतलब खुद पे इतना यकीन था, I'll get the another one जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाएगा. But in this stage लोगों को लगता है कि yes ये मिल रही है ले लो. Simultaneously I'll prepare. Yes. How basically you overcome that? दो फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है. एक तो तुम्हारा फैमिली कितना तुम्हें सपोर्ट कर रही है. तो माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, एंड they, like, I was not sure about myself, but they were very like they had a lot of confidence in my capabilities. They were like, no, if you're clearing this exam, so when I cleared the SBI clerk, they were like, okay, you can clear the manager level as well, SBI PO as well, or IBPS PO as well. When I cleared the NABARD development assistant, which is clerical, they said you should not join this, go for the manager level in this. So they always motivated me to go one step ahead. So that was a very big factor in this entire journey. And secondly, once you start clearing an exam, if you give one interview, 2 interviews, you automatically get that self-confidence where you understand that you can do better. You see all the candidates around you, and you get a sort of a measure of your capabilities. So I think external as well as internal factor, it helps a lot. Yes, only one interview of UPSC increase your amplitude so much. Yes. Yeah, there is a lot of confidence in oneself. Yeah, I basically felt बहुत ज़्यादा confidence आता है एक interview से UPSC. Any interview से. Yes. You're very correct. Yeah. Okay. So I'll talk about your force preference. आपकी first preference क्या थी CAPF में? So mine was CISF, like everyone else. Okay. Because the only thing that took me more towards the CISF, it was my first preference, was the family life. Otherwise, if you see career growth wise, then SSB is any time better than CISF. If you see career growth. Second preference was SSB.
Second was So SSB. I got SSB. Yes, yes. Okay, so did they ask in the interview why do you want to join CISF as your first preference? Yes, they did. They did. And how And basically we need to tackle this question? Sometimes people just took this CISF as first preference. किसी और ने बोला है, ठीक है, तो मैं भी ले लेता हूँ, hmm, CISF इज बेटर, लेकिन उनका इंक्लिनेशन किसी और फोर्स का, उनका जो एप्टीट्यूड है लिटिल बिट डिफरेंट, सीआरपीएफ में दे नीड मोर एक्शन, लेकिन फिर भी वो सीआईएसएफ को ऑप्ट करते हैं, वहां जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए correct. हमें क्या करना चाहिए? So I would say just be very honest. जो भी Okay. तुम्हारा reason है, and first of all, this is a very wrong approach that someone else is taking. That's why you are also opting for CISF. Right. First, if you have appeared for the interview and you're awaiting your results, you should do a research. Uh, as in, if you're cleared the second phase and you're filling your draft, then you should do the research and then fill the preference. What service, which particular force serves which border, and the kind of job profile it entails. So you should know what kind of job you're putting up as first preference. So I'd done that and I knew very clearly. So my reply to that would be very honest. If it is just because of family life or if it is because of the posting, then you should say whatever reason. But you should also be ready for the counter question. So many of my friends have given the reason that I chose CISF for the kind of for the kind of postings or the Right. kind of city posting that it has. So they get a counter question that okay, but CISF is also posted in remote areas like Jamshedpur. So I think that you should be prepared with the counter questions as well. Okay. They will ask, they will cross check, they will deep dig, Yes. मतलब क्या बेसिकली इसके अंदर है, कैंडिडेट के अंदर सच में चाह रहा है नहीं चाह रहा है। हाँ हाँ द हाँ मोमेंट वी ओपन द माउथ उनको पता लग जाता है, मतलब यस यू से जेन्युइन वन है वर्ड और वो क्या, उस वर्ड पे ही पूरा चल सकता है तुम्हारा इंटरव्यू वो ऐसे चल। भी हो जाता है राइट। सो मैं एक विजुअल्स दिखाना चाहूंगा इसमें। दिस आई थिंक योर चैनल ना, दीपक yes सापकिल। yes this video I have prepared along with my fellow officer ओके। colleague. So ओके। we made this entire we compiled the entire 52-week journey into this one video. So here we are introducing ourselves. This is my introduction. इट्स अ मास्टरपीस, इट्स अ मास्टरपीस। Thank you for playing this. So you can share this video with your students so they know what kind of training goes on, because a lot of us who went into यस। SSB, they had no clue what kind of training goes here, and due to which many of they couldn't take the physical hardships, and many of us had also resigned during the center. So 42 of us had joined and only 36 of us had completed the training. So you can understand the kind of mental strength it requires to go through this entire training. They resign because of some physical injury or they do not want to continue, it's all So few of them couldn't continue due to the kind of the level of physical exercise that you have to undergo. okay. A few of them due to that. Then other two were due to some medical reason, and two due to medical reason, two due to they could not take the kind of Okay. physical you have to entire check. Don't get time to talk to your parents. You can't talk at home Okay. on the phone. So it's Okay. the schedule is very busy. So I'll come to SSB. How this organization, how this force is different from other Central Armed Police Force. Since you have done the training. It's different. Yes, it's different in the sense the particular our mandate is to protect the porous borders of India, Nepal, and India, Bhutan. Which first of all, what is different is we are guarding the borders of friendly nations. Right. We are not like BSF where we are guarding hostile nations. So if you see some intruder, you just shoot them. No, we can't do that. Or neither are we like ITBP. We are again guarding Indo-China border. We are not doing that. So Nepal and Bhutan are friendly nations, and since they are friendly nations, it becomes very delicate. The job that an assistant commandant does is very sensitive. You can't use force, unnecessary force. You can't just react violently, because in the end, they are our own people. They are citizens of India. So you can't use harsh force against them. So the kind of work that SSB does, and the motto that SSB has, that service, security, and brotherhood. The motto itself explains our work. We do not we are not a hard force. We are protecting the porous border of a friendly nation. So our approach is that way. Okay. Yesterday, when I was talking with Vineet, तो उन्होंने बोला we rely more on licensing, we rely more on human intelligence. यहाँ पे we cannot use more firepower. तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब how basically you instill the feeling of brotherhood यहाँ की local population में? So the first mean of doing that is by conducting civic action programs that our force is well known for. So we conduct various workshops where we
empower the local population Hmm. to earn their own livelihood by conducting workshops on small livelihood Hmm. workshops. Like we teach them how to tailoring work, we'll teach them small construction works, Okay. we'll like upskilling the local population. That is one way. Secondly is medical civic action. So we Okay. conduct camps where we distribute medicines or other necessities. So second is that. So this is the formal route. On the other side, we have also the informal route where the force helps the local population wherever we are posted in Hmm. whatever way we can. So Hmm. be it, I'll tell you a case study where in Jharkhand, Dumka, the sarpanch of the village, she was pregnant, and at night she's getting a labor, but they don't have vehicles in that village. So the company commander there, who is now in our posted in our academy, he provided his own vehicle and to take her like 15 kilometers away to a government hospital. Hmm. So that way we build up the goodwill, and Okay. I think that helps us a lot. At the same time, I think 1 month ago, I read a news. There is some incident with the CRPF force in the Naxalite area, और लैंड माइन पे उनका पैर आ गया, वन ऑफ द सोल्जर्स. बट वन ऑफिसर डिक्लाइन कि आप मेरे को इस गाड़ी में मतलब इसको नहीं लेके जा सकते. एट द सेम ऐसा कुछ Yeah, इंसिडेंट yeah. था. So that's the difference. I think we proactively help the public in whatever way we can. ओके. So that is why you were asking how do you build that human int network. So I think these small things are something that matters. ओके. गेम सेट. सो कमिंग बैक टू योर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग कितने पीरियड की होती है? हाउ मेनी वीक्स? 52 weeks. 52 52 weeks. weeks. And I think there is a commando course in line, 8 weeks. Yes, it's in line. Next month we are going there. And next, are you excited for it? Yeah, kind of scared as well because yeah, in Bhopal it's a Okay. plateau region and Yeah. we like it's whatever events that are conducted as a part of the training, they're already so difficult. Plain regions mein. Now Okay. imagine doing more strenuous effort, like putting in more strenuous effort, and doing that in the hilly terrain where already the oxygen is low. So Okay. it's gonna be fun and Okay. excited as well as scared for it. But yeah, Okay. we'll do it. Okay. Okay. So कमांडो कोर्स होने वाला है. उसके बाद डू यू हैव अनदर प्लान फोर्स में रह के? डू यू वांट टू रिमेन इन योर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद? Yes, currently, yes, I am gonna stay in the force and provide my services in whichever way I can, like serve the country हम्म. while performing my duties diligently. But at the हम्म. same time, I am going to prepare for UPSC civil services. Like इसके ऊपर मेरे लिए इसको अभी एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज Yes. एग्जामिनेशन. Yes. तो उसमें भी IAS IPS ये दो मेरा टारगेट होने वाला है. Right. तो आई एम गोना प्रिपेयर फॉर इट. Right. So we basically wish you good luck कि इस जर्नी में आप भी थैंक यू. रहें. आपके कल because I talked with विनीत, उन्होंने बोला कि first of all he is an alone, I would say कि learner, अकेला पढ़ता Yes, है. yes, ठीक he's है. quite brilliant that way. Yeah. हाँ, in brilliant that way. But at this stage एकेडमी में आने के बाद if you find a similar like minded person कि वो भी इस चीज के लिए अप्रोच कर रहा है, तो इसमें कुछ हेल्प मिलेगी कि आप दोनों मतलब डिस्कस कर सके और भी जो भी हाँ, it does, करना it चाहते does, it does. Because academy में या फिर कहीं पे भी in general while preparation also we get very less time. हैं. मतलब preparation को जितना time मिले वो कम ही लगता है ऐसे. तो Okay. if you discuss that over a chai or over some snacks with someone, so you don't need another, you don't need to spend same a certain amount of time on revision. वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ उसी में ही हमारा एक रिविजन हो जाता है. तो आई थिंक वर्किंग इन ग्रुप और स्टडिंग इन ग्रुप हेल्प्स. बट दिस ऑल्सो हैज डाउन साइड बिकॉज जब मैं दिल्ली में था तब ये जो चाय के ऊपर चर्चा चलती थी वो काफी लंबी भी चल जाती. तो जो कोर प्रिंसिपल था कि पढ़ाई करके रिविजन करना वो कहीं और डिविएट हो जाता है. सो आई थिंक वी शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट लाइक हाउ वी यूटिलाइज आवर टाइम. Okay. One question is, imagine you would have joined this any banking job और उसको ज्वाइन करने के बाद क्या आप रिग्रेट करते क्या मैं CAPF ज्वाइन करता? हाँ, काफी रिग्रेट करता बिकॉज मेरे पहले से ही CAPF में जो थे, CRPF में कुछ है who had cleared a year prior to me. I was in touch with them, so I was like I knew what kind of journey they are going. और फिर हमारे आसपास के जो टाउन्स है वहाँ के भी कुछ लोग सिलेक्ट हुए थे CAPF में. So I saw the kind of celebration they are getting. Or compared to a banker who is just working a 9 to 5 job. In fact, they are overworking. The bankers are working even after the banks are closed. So if I had joined that, maybe I would have had a good like initial start, a good family life, or as I would have made more money maybe. But then I would have always had this regret of not joining the forces where you get the uniform, you get a adventurous life. Something other else is happening. It's not monotonous. I would have always had this regret. So one more question. 2019 बैच this CAPF. Correct. बहुत अनसर्टेनिटी थी इसमें. कोविड वाज देयर, इंटरव्यू डिले हो गए थे, बहुत सारी अनसर्टेनिटी. टिल उसके बाद भी पीपल हैव ज्वाइन, ट्रेनिंग भी हो गई है, लेकिन अभी भी एक अनसर्टेनिटी है CAPF के अंदर. 2021 इंटरव्यूज
डिलेड, वो भी डिलेड Yes, हो yes, गया, yes. And yeah, I know नोटिफिकेशन about ये the भी हो रहा है। case. सो हाउ टू बेसिकली इस अनसर्टेनिटी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में, क्योंकि आपने किया है, आप बता सकते हैं इनको, स्टूडेंट्स। तो ये जैसे again the phase that these people are going through, that we had gone through in 2019, I think it is very similar. हम हमें भी almost 2 साल का गैप था हम्म इन फर्स्ट फेज से इंटरव्यू हम्म तक, फाइनल रिजल्ट तक। हम्म तो अभी भी जो कोर्ट केस चल रहा है जिसके से इंटरव्यूज रुक गए हैं, तो आई थिंक इट इज वेरी सिमिलर एंड द वे टू डील विद दिस इज इनसाइड, लाइक वो एक एक्सटर्नल जो भी ये आउटकम होगा इट इज बेस्ड मोस्टली ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स विच वी हम्म कैन नॉट कंट्रोल। हम्म जैसे हमारे केस में भी कोरोना था, वी कुडंट कंट्रोल इट। हम्म सो यहाँ पे भी ऐसा है कि वो कोर्ट केस हमारे हाथ में नहीं है, तो yes, हाउ डू यू डील विद इट इज इंटरनली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एंजाइटी काफी आती है एस्पिरेंट्स के लिए, वी हैव गॉन थ्रू दिस, एंजाइटी काफी रहती है। तो इसी एंजाइटी के चक्कर में मैंने वो बैंकिंग एग्जाम शुरू कर दिया था, लेना देना तो था नहीं, मुझे वो करना नहीं था, बट स्टिल आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट। सो बट इट केप्ट मी डिस्ट्रैक्टेड, सो उसका एक ही फंडा है कि डिस्ट्रैक्टेड रखो खुद को, टेक अप सम गुड हॉबी, प्रोडक्टिव हॉबी which can supplement your preparation. So राइट। either you take up some hobby like reading, read some good books by well-known authors. You can read up good non-fiction books. Secondly, self-help books padhiye. And at the same time, if you keep on with your preparation, you can always go for helping hobbies such as meditation. So I can see in the background there is this picture behind defense talks. I can see that red picture. So राइट। that's called a mandala, and it is one of my hobby. Mandala making is my hobby. ओके। So yeah, so during the lockdown, I used to make a lot of mandalas, ओके। and I think it helped me calm my mind. So basically, यही है, अपने हाथ में ये इसका आउटकम नहीं है. Keep yourself calm and just like trust the process is what I would suggest. ट्रस्ट द प्रोसेस। अल्टीमेटली Yes, एग्जाम होगा, आपके पास जो मतलब इनवेरिएबल नहीं है, जो आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो, वर्क कंट्रोल ऑन नहीं कर सकते. जिस यस, चीज को कंट्रोल और कर सकते हो, उस पर काम गवर्नमेंट ही करो। एग्जाम खारिज नहीं करने वाली है. यहाँ हम्म पे बहुत ही वैकेंसीज है असिस्टेंट कमांडेंट्स की. सो दे हम्म आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एग्जाम, इंटरव्यू आपके हो गए. दिस इज फॉर द मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स. द हम्म इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड, द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड. देयर माइट बी अ डिले, बट इसमें कुछ गलत नहीं होने वाला है. सो यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस. another question is, what are the basic things required in a person to come in this particular job? क्या उनका मतलब एज एन कैरेक्टर, एज एन क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसको अगर फर्स्ट एंड सस्टेन करना है? फॉरमोस्ट, yes, would be honesty, because see, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में फिर there are chances of मतलब करप्शन के भी केसेस हमने काफी सुने हैं. हाँ तो ये। ऑनेस्टी, यू शुड हैव ऑनेस्टी. सेकेंडली, यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड इंटीग्रिटी एक होनी चाहिए. मतलब हम जो भी सिविल सर्विसेज के पेपर 4 में पढ़ते हैं, इट शुड नॉट बी फॉलोड ओनली इन लेटर बट ट्रूली इन स्पिरिट. स्पिरिट। वॉट एवर क्वालिटीज यू राइट इन दैट पेपर 4 ethics paper, you should truly inculcate those values. So I think basically hard working, honesty, और एक जो आप like since you're gonna deal with so many people, so I think you should be a good listener first, and then you should also have good people skills. So ये basic skills है जो होनी चाहिए. राइट। सो अनदर क्वेश्चन इज, एक फेज होगा जहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग बहुत ही आप फिजिकली डिमांडिंग ट्रेनिंग है, मेंटली डिमांडिंग ट्रेनिंग है, Yes, दे yes. मस्ट बी अ टाइम जब लो फील करते होगे यार, क्विट, मतलब क्विट तो नहीं कहूंगा बट ये बंक इट टुडे, No, बंक no, कर देते quit, हैं। quit. क्विट बंक का तो there's no नो बंक का ऑप्शन ऑप्शन नहीं है फौज में. There's no बंक का ऑप्शन फौज में. बट क्विट का ऑप्शन मतलब ऐसे ख्याल आता है. So during this है। training, I suffered a fracture in my leg, the left leg. ओ So I had a plaster on for almost 21 days. So it was a very difficult phase where I can see all my colleagues going ahead of me. मैं भाग नहीं पा रहा हूँ. तो ये mentally it is a very overwhelming for anyone. And I saw people like जिनका इंजरी हल्का छोटा मोटा इंजरी हो जाता है. It is very overwhelming कि पूरा ऐसा मतलब एक फेज आ जाता है डिप्रेशन टाइप भी. घर राइट। वालों से आप बात नहीं कर पाते कभी कभी, एट अ स्ट्रेच भी बात नहीं कर पाते हैं. फायरिंग से हम लोग लेट आते हैं 12-1 बजे रात को, तो राइट। वी कांट टॉक टू देम. तो ऐसे भी फेजेस आते हैं. सेकेंडली, जो हर वीकली टेस्ट होते हैं हमारे फिजिकल के, समटाइम्स यू कांट क्लियर इट. तो उसमें भी नेगेटिविटी काफी आती है, और हमेशा ऐसा लगता है कि अरे मैं क्यों आ गया. आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई होम, और मे बी आई शुड हैव टेकन अप दैट बैंकिंग जॉब, ऐसे लगता है. तो आई थिंक ये जो मतलब ये फेज जो है टेम्परेरी है, जैसे बोलते हैं पेन इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है. तो आई थिंक व्हाट गॉट मी थ्रू दिस एंटायर फेज इज द थॉट ऑफ व्हाई आई स्टार्टेड एट फर्स्ट. तो जैसे राइट। सिविल सर्विसेज में भी हम ये सोचते हैं कि कभी गिव अप करने का सोचते हैं, इवन आफ्टर नॉट क्लियरिंग द इंटरव्यू मेंस. तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड. यस, एक्सीलेंट। तो I've read दैट, somewhere, कीपिंग if दैट. if why is strong, then how is easy. तो ये जो why यस, करेक्टली. strong होगा तो ultimately you can do things. Okay. So let's come to the preparation, CAPF की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के यही रहते हैं. एस्पायरेंट्स यही पूछते हैं कि क्या आपने डिफरेंट किया था. CAPF was your first attempt ना, this 2009? यस, यस, यस. अगेन विनीत का भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैं जानना चाहूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने
क्या ऐसा डिफरेंट किया, डिफरेंट मतलब इन द सेंस सिविल से डिफरेंट क्या किया, कुछ अलग पड़ा पेपर वन के लिए? पेपर टू के लिए तो इट्स ऑलमोस्ट ओवरलैप, बट पेपर वन के लिए व्हाट Yes. यू डिड डिफरेंटली? So first of all, the approach that I followed for this exam is knowing what the exam is demanding. ओके। भले ही यूपीएससी ही उसे कंडक्ट करी है, बट वी शुड नो व्हाट इट इज डिमांडिंग. So how do I know what they are demanding? You take up the previous year question papers. So मैंने सबसे पहले previous year CAPF वाले question papers उठाए and I studied them properly. पेपर वन और टू में कैसा रहता है, तो एक्टिव रीजनिंग में सब तो हो जाता है. पेपर टू में इट इज वेरी मच ओवरलैप एज यू सेड, यूपीएससी के ही पैटर्न पे है, बट एक लेवल नीचे ही लगता है मुझे. मतलब वो इतना हार्ड इंटेलेक्ट नहीं लगता है वहां पे. लेकिन जो फर्स्ट पेपर रहता है उसमें यूपीएससी से मतलब उस लेवल का डिफिकल्टी रहता है. So you have to go through and see what the exam is demanding. कि उनके what are the type of questions they are asking, what kind of data they are asking. If they are asking factual questions, what they are asking. So I think knowing what the exam demands is very important in any exam, not just CAPF. So I did that, previous year question papers, and I like very like solve them every day. ओके। Like regularly उनको solve करना. दैट और एनालिसिस भी करना कि कौन सा गलत हुआ है. अगर ये समझो हिस्ट्री का मिडीवल का कुछ गलत हो गया तो आई शुड गो एंड रीड दैट चैप्टर. वन इज दैट, एंड द सोर्सेज दैट आई फॉलोड वाज फर्स्टली जो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए थे वही, बिकॉज देयर वाज नो बैक इन 19 देयर वाज नॉट मच अवेयरनेस अबाउट दिस एग्जाम आई थिंक, एंड देयर वर नो स्पेशल पोर्टल्स फॉर सीएपीएफ एग्जाम्स एज सच. तो तभी हमें ऐसा कोई गाइडेंस करने वाला या फिर ऐसे कोचिंग क्लासेस स्पेसिफिकली फॉर सीएपीएफ एग्जाम नहीं थे. तो जो भी हम सीनियर्स से गैदर कर पाए थे कि ये मटेरियल पढ़ो वो मटेरियल पढ़ो, और जो हम खुद के एनालिसिस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करके पढ़ पाए, दैट वाज आवर गाइडिंग फैक्टर. राइट। सो दैट वाज योर गाइडिंग फैक्टर। और इफ आई कैन आस्क रिसोर्सेज आपके थोड़े से, यू नीड नॉट टू नो गिव एनी कोचिंग नेम, बट रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज आप बेसिकली रिलाइड ऑन एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड सोर्सेज पे, या कोई नोट्स ऐसा कुछ शॉर्टकट भी आपने? Standard sources should be your base, ओके। but once the exam approaches, you can't go back to those. So always there are some of the other compilations of the coaching classes in and around Delhi, or online also. अभी काफी बढ़ गया 2020 के बाद. तो I think those sources are something that I followed. मतलब अपना काम कम से कम करना है, like get the most out of the least time invested. So that is the approach I followed. ओके। सो पेपर टू के लिए भी एक गाइड कर दो, जैसे आप हमारा तो बैकग्राउंड रहा है, आपका विनीत का, दोनों का सिविल्स का। करेक्ट करेक्ट. ठीक है, बट समवन फ्रेश है जो सीडीएस लिख के आया है, बस एफकेट उन्होंने दिया है, नो कमांड ओवर द सब्जेक्टिव पेपर, उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि कैसे अपने आप को अपडेट रखे, कैसे राइटिंग स्किल आप अच्छा कर सकते हो? ठीक है, तो इसके लिए मुझे बताइए थोड़ा पेपर टू के लिए। ओके, सो उसके लिए ऐसा अप्रोच रहेगा कि जो पहले से लिखते आ रहे हैं, हु आर मास्टर्स इन दिस फील्ड, आई थिंक यू शुड रीड देम फर्स्ट. सो फॉर दैट अ गुड सोर्स इज द एडिटोरियल कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर्स, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आइदर ऑफ दोस. तो उसके एडिटोरियल पढ़ने से एक लैंग्वेज का फ्लो, और वो लोग उतने लिमिटेड 300 वर्ड्स में कैसे अपना पॉइंट पेश कर रहे हैं, ये एक पता चल जाता है. तो उससे पहले आप रीड कीजिए, फिर एक वो हैबिट में लाइए, ट्राई टू राइट ऑन अ सब्जेक्ट. सो इफ यू आर राइटिंग ऑन फार्म बिल्स, तो राइट ऑन दैट. डिमोनेटाइजेशन जैसे अभी न्यूज में है, तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में यू शुड राइट अप अ स्मॉल पैरा इन विच यू आर लिस्टिंग डाउन द पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, एंड देन यू शुड आल्सो प्रेजेंट योर व्यू ऑन इट in a very subtle manner. You shouldn't be very extreme in your presenting your views. So I think that approach, first reading from the best एडिटर से पढ़िए, या फिर टॉपर्स कॉपी रहती है किसी की, टॉपर यूपीएससी वालों की, तो उनका पढ़िए, उससे एक अप्रोच पता चलेगा, एंड देन अप्लाइंग इट योरसेल्फ. राइट। सो आप कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करते थे, हिंदू या फिर? मैं द इंडियन एक्सप्रेस, बट आई वुड नॉट लाइक, आई वोंट से, आई एम शुडंट से कि यही फॉलो करो, बिकॉज बहुत मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हिंदू पढ़ के भी क्लियर किया है. तो आइदर और आपके पास बहुत ही टाइम है तो दोनों, बट आई वुड नॉट रिकमेंड ऐसा दोनों पढ़ना. विनीत जो है उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, आपने भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा. आई टू रीड इंडियन एक्सप्रेस अर्लियर, आई यूज्ड टू रीड द हिंदू, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस फील हुआ, देन आई स्विच टू द इंडियन एक्सप्रेस. सेम हियर. सो वी आर फ्रॉम द सेम जर्नी. आपने भी उसी टाइम पे स्टार्ट किया था व्हेन हिंदू वाज द डील, देन वी स्विच टू एक्सप्रेस. एक्सप्रेस फिर जल्दी खत्म भी हो जाता है और इतना जरूरत भी नहीं है. यस यस यस. सो वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क, रिजल्ट किसने बताया कि आपको, आप सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद क्या फील? ये रिजल्ट एक्चुअली आया, और वो टेलीग्राम पे आते ही रहते हैं जैसे चैनल्स रहते हैं, but I was not online that day, and one of my friends who was preparing along with me, he got to know. He saw the list, and he found out that okay, I am selected. He had my roll number and all. So he called me up and he said कि तुम्हारा हो गया है, क्लियर हो गया CAPF, congratulations. वो सीधा congratulations AC साहब, आप क्लियर हो गए. तो मेरे को लगा ये मजाक कर रहा है, अभी दोस्त है, मजाक चलते ही रहता है, मतलब झूठ बोल रहा है. अरे नहीं नहीं, सच्ची सच्ची. फिर इट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग एज वेल एज, मतलब झूठ भी लग रहा है
पर भी मतलब यकीन भी था कि क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा सिचुएशन था कि समवन एल्स टोल्ड मी दैट आई क्लियर्ड द एग्जाम एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो। पहले तो यकीन नहीं हुआ, देन आई कंफर्म वन, लाइक वो भी मैं टेलीग्राम वाला पीडीएफ पे नहीं चेक किया, आई वेंट टू द यूपीएससी वेबसाइट एंड देन चेक टू बी वेरी श्योर। बाद में ब्लंडर ना हो जाए, सबको फोन करते हैं हमें सिलेक्टेड है, हाँ 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 पता हाँ, लगे। ऑलवेज ऑलवेज यस, वो फेक पीडीएफ भी काफी सर्कुलेट होती है एंड में जब सब डेस्परेट होते हैं। मतलब राइट राइट। हाँ। ओके, सो कैसा फील हुआ, मतलब नंबनेस, एक्साइटमेंट, ऐसी फीलिंग होती है, मतलब इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। Yes, I don't think I can describe it in words, but हम्म I was shocked, happy, ऐसा एक हम्म numbness था कि हम्म चलो finally this effort, जो पूरा struggle वाला phase है, it is coming to हम्म, an end. It finally it has come to an end. मतलब तब हम्म, पता नहीं था कि ये अलग एक साल का struggle और चलेगा, हाँ, but जो preparation वाला phase है वो वो तो खत्म एटलीस्ट हो ओवर गया। हो ऐसे एक relief, mental relief होता है, ऐसा अनबर्डन होने की फीलिंग होती है, गया। वो I think काफी overwhelming है, और उसी के लिए हम इतने साल से प्रिपेयर करते हैं। ओके। तो अभी भी बताते वक्त मुझे ऐसे गूजबम्स आ रहे हैं कि वो उस दिन का याद आता है। गूज बम्प आए जब जब आपकी पीओपी थी, पासिंग आउट परेड। हाँ, exactly. Like my parents were here and my mom हम्म was crying. हम्म So it was a different feeling altogether, you know, when the stars were unveiled. हम्म तो it was a altogether different feeling. तो आप ऐसे वो पिपिंग सेरेमनी के बाद सब लोग कैप टॉस कर रहे हैं, all of my साल batchmates है ना, साल भर आप उसी ग्राउंड में आप पीटी करते हो, लेकिन उन उसी दैट डे ग्राउंड। वो इतना यस डिफरेंट हो जाता है, आखिरी दिन मतलब बहुत नया यस लगने लग यस। जाता है सब कुछ, गूज बम्प एंड ऑल दिस, मतलब यू बिकम फेरोशियस, इस तरह से आप जाते हो। फिर यस, और उसी ग्राउंड पे हमने रगड़ा खाया है साल भर, हम्म और आज वो ग्राउंड को हम सम्मान दे रहे हैं, हम्म मतलब रैंक के साथ उस पे चल रहे हैं। तो हम्म इट इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग एंड आई थिंक नो अदर जॉब कैन गिव यू दिस फीलिंग। राइट। ओके, तो मेरी तरफ से सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपसे जैसे मैंने कुछ नहीं पूछा, आप शेयर करना चाहते हो रिगार्डिंग योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर कुछ इंटरव्यू के बारे में आप गाइड करना चाहते हो। इंटरव्यू के बारे में, जैसे मेरा इंटरव्यू था 11 नवंबर, 11/11/2020, सो ये ऐसा हम्म, याद रह गया डेट। तो ठीक है। और मेरे बोर्ड मेंबर थे एम सत्यवती मैम, शी वाज हेड हम्म बोर्ड एंड शी वाज नोन टू आस्क वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। हम्म So I went in, and then first of all, the entire setup is such that everyone's focus is on you. Like five राइट। board people, like the members are looking at you. हम्म So they started with tell us about yourself, and whatever you're telling about yourself in that entire 2 minutes, हम्म they'll catch one word. Like one member will catch one word in that, and हम्म on that they'll grill you. हम्म So एक ने मेरा यूपीएससी का सुना कि मैं I had given names, so they हम्म asked me about what which is my optional. फिर मैंने ज्योग्राफी बताया, जिस मैम को ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी बताया। तो हम्म माय एंटायर इंटरव्यू वाज आस्क्ड ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल, मतलब सीएपीएफ रहेगा बगल में, मेरा यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा था। हम्म ये मैल्थस का थियरी बताओ, ये थियरी बताओ, वो सब ज्योग्राफी का पूछने लग गए। और ओके। आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर हम्म ज्योग्राफी क्वेश्चन। हम्म सो व्हाट दे डू इज दे टेक यू अफोर्ट, लाइक एकदम शॉक कर देते हैं। हम्म So they want to see how much you remain calm in that situation. हम्म Then after that, questions were asked more about the hobby. Like मैंने mandala making लिखा था, तो they asked me why this hobby. हम्म Tell us more about it. The types of हम्म mandala drawings. फिर हम्म reading लिखा था, तो they asked me which you're reading, which book you're हम्म reading. हम्म And mind you, these people are very well read. हम्म Anything you say, just don't bluff in front of them because हम्म they'll catch it within a second. हम्म So they are very well read and they'll ask you more about whatever you say. जैसे मंडाला के बारे में मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे भी इतना नहीं पता था जिनको जितना उनको पता था। हम्म So that kind of, और बुक रीडिंग, नॉन फिक्शन, वो तो मतलब दे आर मास्टर्स इन दैट। हम्म सो दे आस्क यू अगेन, अच्छा तो युval नोआ हरारी का कौन सा बुक तुम्हें पसंद आया, क्यों पसंद आया, व्हाट इज द जस्ट ऑफ दिस बुक। सो हम्म आई वुड सजेस्ट whatever you go into that interview and whichever even a word you say, you should have at least half an hour, 15 मिनट का उसके ऊपर बोलने जैसा होना चाहिए। राइट अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल जो भी ले जा रहे हो तो वेल बी प्रिपेयर्ड विद दैट, सीएससी का भले ही वो ऑप्शनल हो, योर राइट हॉबीज, योर बैकग्राउंड। आई हैड वर्कड इन कॉग्निजेंट, तो उन्होंने मुझे पूछा था कॉग्निजेंट के बारे में, लाइक दे आस्क्ड मी अबाउट कंप्यूटर फील्ड एज वेल। और फिर एंड के 2-3 मिनट दे आस्क्ड मी अबाउट डिफेंस रिलेटेड, मतलब ये सीएपीएफ रिलेटेड दे आस्क्ड मी। बाकी पूरा इंटरव्यू हियर एंड देयर, लाइक इट वाज मोर लाइक अ सिविल सर्विसेज इंटरव्यू रादर देन अ सीएपीएफ इंटरव्यू। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल, लाइक व्हाटएवर कम्स योर वे। ऐसी कोई मोमेंट थी जो मतलब जॉ ड्रॉपिंग हो, ये क्या पूछ लिया, आईब्रो रेज हो गई हो आपकी एंड स्टन हो गए हो एकदम। ये ऐसा तो मतलब नहीं हुआ, मतलब हाँ दे ज्योग्राफी का एक पूछा उन्होंने, मतलब जो हम्म हमारे सिलेबस में भी नहीं है, वो उन्होंने रैंडमली एक क्वेश्चन पूछ लिया और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये था भी सिलेबस में या फिर नहीं, हम्म बिकॉज इनको अगर बोल दिया कि ये नहीं है तो फिर वो हम्म बोले फिर तुमने ज्योग्राफी क्या पढ़ा, और अगर आंसर गलत दे दिया तो फिर ऐसे आई जस्ट वेटिंग, आई एनालाइजिंग। और हम्म तब तक दूसरा बोर्ड मेंबर प्रेशर डाल रहा है कि हम्म आर यू श्योर, डू यू नो द आंसर, डू यू नो द आंसर, लाइक ही इज ट्राइंग टू get me to say something. हम्म But I kept my calm. I thought about it. कि, okay, I don't think I've read this anywhere. So I told them honestly, कि, ma'am, I can't recollect reading anywhere during my preparation phase. So ओके। they can ask you anything. You should just be calm during that situation.
So did you find any difference between the behavior of the board members? एक member बहुत काम बोलता है, one is speaking हाँ, very मतलब infrequency बहुत ज्यादा है उनकी बोलने की, one is very aggressive. one is Yes, very yes, aggressive. So how to basically handle this situation? Aggressive के साथ automatically क्या होता है, mirror करने की कोशिश करते हैं हम भी थोड़ा yes, सा yes, aggressive yes. हो जाते हैं, और जो काम Hmm. बोलता है उसके साथ आपकी automatically जो pitch है सब कुछ है वो नीचे आ जाता है, तो इस situation में क्या करें मतलब? तो आई थिंक उसके लिए आप पूरे टाइम ही एक फ्लो मेंटेन रखें, काम ही रहना है, बिकॉज Okay, सी दे आर चूजिंग अ फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट हु इज गोना लीड अ ट्रूप ऑफ 150 पीपल. okay. आप एकदम ऐसे क्विक रिएक्शन देके कैसे होगा आपकी कंपनी का? सो दे आर लुकिंग फॉर दैट. सो हम्म माय अप्रोच वाज कि ऐसे 5 लोग बैठे हैं, तो थ्रू आउट द इंटरव्यू समझो मुझे सबसे लेफ्ट मोस्ट पूछ रहा है, तो हम्म while answering this question I used to also look at the other 4 people, right so that I am not just looking at him. It's not sort of a हम्म disrespect. हम्म So the calm member is sitting in front of you. The most aggressive one is sitting on the right. So when you're answering the aggressive person, I also used to look at the other 3. So हम्म जैसे ही आप calm member को देखते हो, they are sitting there smiling at you. So आप automatically एक मतलब tone down हो जाते हो, not हम्म answering very extremes. So हम्म I think that approach, like you stick to your own behavior. Do not get intimidated because वो करते हैं. हम्म They'll ask you such questions or their body language is very aggressive. राइट किसी का बहुत ही slow होता है, like आपको हम्म question तक सुनाई नहीं देगा, इतना slow हाँ ऐसा डल. राइट राइट राइट। तो सो उस मेरे हिसाब साथ से आपका आंसर नहीं होना चाहिए कि मैं डल वाले को एकदम डल आंसर दे रहा हूँ और एग्रेसिव वाले को चिल्ला चिल्ला के, ऐसे नहीं. तो आई थिंक यू शुड कीप अ वेरी फ्लैट टोन में, ज्यादा भी एक्साइट नहीं होना है और ये भी नहीं होना ओके नाइस, क्योंकि मैंने फील किया मेरे साथ में मतलब जो मेंबर बैठे थे ही कैन इवन टच मी, मतलब ऐसे टच कर सकते थे, है. तो ओ, उनकी टच वच भी. आवाज, हाँ नहीं टच नहीं किया बट कर सकते थे, तो इतना बगल में मेरे बैठे हैं वो, बट फिर भी उन्होंने इतने आराम से पूछा कि यस. आप क्या ज्वाइन करना चाहते थे, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, फर्स्ट टाइम आई कुड नॉट हियर, देन आई सेड, हाँ, मैं हाँ, थोड़ा सा हाँ, इंक्लाइन भी हुआ तब भी मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो मेरे साथ बैठ रहे जानबूझ हाँ. के दे वांट टू चेक, मतलब क्या चेक करना चाह रहे थे आई डोंट नो, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. देन आई सेड सर आई कुडंट हु हियर, वाज द बोर्ड मेंबर? हु वाज द बोर्ड मेंबर? समिता नागराज, ओ, नागराजन मैम. हाँ ओके. उनका था। तो हाँ, हाँ, हाँ. वो तो बहुत फेरोशियस थी मैम, आते ही हाँ, यस, मतलब यस, क्या आई क्या हर्ड. बोला उन्होंने, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। But good, since you have a good experience of interviews and all, you can definitely guide your students better. राइट राइट। हम तो भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ही दे रहे हैं. लाइक इफ यू आस्क 36 of us, they'll give 36 different aspects. Now it is your work to sort of combine it and deliver it to your students, and I think you are doing a great job at that. So थैंक यू kudos for this initiative, Defense थैंक यू Talks. थैंक यू थैंक यू। सो विल मीट अगेन, और थैंक यू Yes, दीपक, sure, Aman. थैंक यू आप Thank you. यहाँ पे आने के लिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मुझे लगता है कि इतनी चीजें यहाँ से कोई सीख के जाएगा तो उनको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो मैं उन सबके डाउट आपके पास लेके आऊंगा, कोई पर्सनल Definitely, कोई definitely, भी, Aman. Yes. राइट। सो I think all the students who are working, who are studying with you, I think they are in very safe hands. And थैंक यू all the best for your career and the institute as well. You'll do a great job. थैंक यू दीपक, थैंक यू, Thank you, Aman. इट्स अ Yes. वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू। Same here. सो Thank गुड you.